When you say 307/149, what is the meaning? Lordship. Common object Lordship. to cause injury which is dangerous to life. Lordship. Have you suggested that there is no light? Lordship. In your cross-examination, have you Lordship. suggested? That has come. That is come. In your cross-examination, have you suggested? Lordship. Lordship, this is a case of triple murder and punishment under section 147 for 2 years, 148 for 2 years, 302 with section 149 RI for life and fine of rupees 5,000 under section 307 with section 149 5 years plus fine 342 with section 149 1 year 458 with section 149 5 years and 506 with section 149 2 years. Lordship, in the FIR 25% has been named and 20 to 25% were unknown and they have been involved in the Lordship, may I read the FIR that will clear the bone of contention, how he identify the move of the person and whether the dispute was with the appellant or not. After investigation, Lordship, charges submitted and 7 persons were faced trial and one Sita Yadav is before your Lordship his first time on the point of suspension of sentence and grant of bail is being argued, Lordship. That is Sita Yadav. I am representing Sita Yadav, Lordship. Out of 7 persons, 3 persons has been acquitted and 4 persons have been convicted under the aforesaid section, as I have already explained, Lordship. Lordship, first of all, I want to draw your attention, Lordship, on the FIR. May I read, Lordship? मैं 100 आज दिनांक 12/12/17 को 10:30 बजे दिन में PMCH इमरजेंसी वार्ड में पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बयान देता हूं कि हम लोग का पूर्व से ही जमीनी विवाद एवं दरवाज़ा खोलने को लेकर लाली यादव, लॉर्डशिप, दैट इज इम्पोर्टेंट, लाली यादव से चल रहा था। मेरा 3 फीट जमीन लाली यादव के घर की तरफ निकलता था, जिसका नापी भी हुआ था। नापी में मेरा 3 फीट जमीन लाली यादव के तरफ निकला, फिर भी हम लोग 3 फीट जमीन लाली यादव को दे दिए। हम लोग लाली यादव से घर के पश्चिम तरफ दरवाज़ा खोलने के लिए अनुरोध किए, किंतु वे लोग ज़बरदस्ती हम लोगों को दरवाज़ा खोलना नहीं दे रहे थे। इस बात को लेकर लॉर्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़ा का जड़ क्या है। इस बात को लेकर
दिनांक 11/12/2017 को रात्रि करीब 12:10 बजे करीब 50 से 60 लोग का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिए। उस समय हम सभी लोग सोए हुए थे। अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दिया तो हम घर के दरवाजा से बाहर झांक कर देख रहे थे, जो FIR में करे झांक कर देख रहे थे। इज इट पॉसिबल ऑल्सो कि दरवाजा अगर झांक कर 60 आदमी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे रात में? देयर इज ऑल्सो नो सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हुजूर और आगे हम बता दें। दरवाजा खोल बाहर झांक रहे थे, देखे तो पाए कि करीब 50 से 60 आदमी हमारे घर को हथियार लैस होकर घेरे हुए हैं। इससे वे हमारे लाली यादव 25 लोगों का नाम आ रहा है, इसमें मेरा भी नाम है। और डिफरेंट पर्सन का नाम दे रहे हैं हुजूर कि कौन कौन किसको मारा है। 3 आदमी हुजूर डेड पर्सन हैं। दे आर राजू, ललित एंड वीरेंद्र लॉर्ड। हमारे बारे में हुजूर लास्ट में आया हुआ है कि लालती देवी एवं सीता यादव, डेट इज एक्विजिशन अगेंस्ट मी लॉर्डशिप। भाई सुरेश उर्फ राजू को पकड़कर जान मारने की नियत से बुरी तरह मारने लगा। डेट इज एलिगेशन इन द FIR लॉर्डशिप। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट was submitted lordship and charges were framed lordship। हुजूर चार्ज देखा जाएगा। 7 आदमी के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो रहे हैं। 147 में हो रहा है हुजूर, 148 में हो रहा है, 302 रेड सेक्शन 149 में हो रहा है, 307 149, बट there is no framing of charge under section 149। 149 सेपरेटली करने की जरूरत का है? कहीं नहीं हुआ। फिर 302 149 करा है ना लॉर्ड, और 307 149 करा है लॉर्ड। बट देयर इज फॉर 149 देयर आर 2 main ingredients, the unlawful assembly, there should be unlawful assembly, and there is a common object। But in the entire evidence, Lord, there is no evidence on the common object। हम उसको हुजूर के सामने हम दिखा देंगे। तो there is no framing of charge under section 149, but 302 149 and 307 149 has been framed, Lord। When you say 307/149, what is the meaning? Lord, Common object Lord, to cause injury which is dangerous to life. Lord, but in the entire evidence from the prosecution witnesses, Lord, none material be produced by the prosecution witness to suggest that there was common object। All right. हुजूर अब देखा जाएगा FIR में जो हुजूर हम दिखा दिए। बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? दरवाजा को खोलने के लिए झगड़ा हो रहा है। विथ whom? विथ लाली यादव। I am from the different village and different PS। And next, लॉर्डशिप, इनका सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है? दरवाजा से झांक रहे थे। लॉर्डशिप, हम अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या दरवाजा से झांकने के रात के समय, इवन देयर इज नो मून लाइट? Have you suggested that there is no light? Lordship, In your cross-examination, have you Lordship, suggested? that has come. That is come In your cross-examination, have you suggested? Lordship, in the evidence of IO, Are you? I am one by one I consider the witnesses, Lordship। बस थोड़ा सा हमको समय दिया जाए, since
आई लॉर्ड्स, अब विटनेस देखा जाए, 12 विटनेसेस हैज बीन एग्जामिन्ड, आउट ऑफ देम 6 आर मटेरियल विटनेस and rest are the formal witnesses including IOT PW10. Hujur, PW1 is eyes witness and injured person of the offense lord. PW1 इनके बारे में कहा जा रहा है कि हमने इनको मारा, और एक वन ललिता देवी, ही डज नॉट नेम मी लॉर्डशिप. PW1 लॉर्डशिप क्या नाम है उनका? सुरिष्ट कुमार, PW1 लॉर्डशिप. नाइदर इन चीफ नॉर इन क्रॉस लॉर्डशिप. ही स्पेसिफिकली स्टेटेड दैट हु हैज असॉल्टेड हिम. पेज 2 पे देखा जाएगा, पैरा चीफ में हजूर, मुझे भी सतीश कुमार रणधीर कुमार मारा. हिज एविडेंस वैल्यू इज मच हायर देन अदर विटनेसेस लॉर्डशिप. अगर इन्होंने मेरा नाम ले लिया रहता, देयर इज नो नीड ऑफ अदर विटनेसेस लॉर्डशिप. दैट इज क्वालिटी ऑफ एविडेंस, नॉट क्वांटिटी ऑफ एविडेंस. दैट इज सफिशिएंट फॉर मी फॉर द कन्विक्शन लॉर्डशिप. बट ही डज नॉट नेम मी लॉर्ड. PW1 he is injured witness and eye witness also. इनके साथ घटना घटती है. He specifically named the Satish Kumar and रणधीर कुमार. इन्हीं के एविडेंस में लॉर्डशिप, one paragraph is very important, that is paragraph 5 regarding the deposition of PW2. इन्होंने कहा है पैरा 5 पे, हुजूर, ग्रामीण मिथिलेश कुमार से बातचीत घटना के बारे में हुई. हम कह रहे हैं हुजूर, हमारा सबमिशन है कि घटना को किसी ने देखा नहीं, नाइदर आई वाज प्रेजेंट. हमारा प्रेजेंस एट द प्लेस ऑफ अकरेंस इज वेरी वेरी डाउटफुल. इवन अब PW2 का देखा जाएगा हजूर, इनको तो PW1 से हम दिखा रहे हैं हजूर कि इनको घटना के बारे में कैसे जानकारी हुई. ये कह रहे हैं कि 50 से 60, 30 से 40 व्यक्ति जुटकर 50 राउंड फायरिंग हुई. डेट वाज डिनाई बाय द PW10 IO लॉर्डशिप. इन्होंने इस तरह की बात हमारे सामने नहीं कहा. नाउ लॉर्डशिप, अब इनका पैरा 2 देखा जाएगा, जजमेंट में भी आया है PW2 का. सुमित कुमार, PW2 के बारे में PW1 है, गवाही दिया है, लल्लन वीरेंद्र और वो है राजू. इवन PW5 वो इज द वाइफ ऑफ द डिसीज, हमको पहचान नहीं कर पा रही है. जो कोई हमारा TIP परेड नहीं हो रहा, सीधे कोर्ट में लोग पहचान कर रहे हैं हमारा. अब PW2 का देखा जाएगा हजूर, इनका लोकेशन क्या है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस से पैरा 2 में आया. सुमित कुमार सूचक मेरे चचेरे चाचा हैं. इनके घर से मेरा घर 20 से 25 डेग पश्चिम तरफ है. मेरा दलान से जनानी की मकान लगभग 20 से 25 डेग दूरी पे है. दैट मीन्स ही वाज अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस 50 डेग की दूरी पे है. कोई सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन का कहीं भी जिक्र नहीं, कैसे हाउ ही आइडेंटिफाई.
रात में 50 लोगों के गैदरिंग में। फिर वो जो PW3 देखा जाएगा, ये भी मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। PW3 भी मेरा नाम नहीं ले रहे हैं हजूर। PW4 के बारे में कह रहे हैं, ये घटना के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन लोग को वहां से जाते हुए देखे, सबका नाम ले रहे हैं। PW4 हुजूर, घटना नहीं देखा था, बस जाते हुए देखा था। उतने बड़े मोब को जहाँ पे 60 आदमी गैदर हुए हैं रात में, ही आइडेंटिफाई द प्लान, जबकि हमारा घर दूसरे गांव में पड़ता है, दूसरा पुलिस स्टेशन है। हमारे फादर के बारे में नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन जाते हुए इतने मोमेंट स्टेज में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ। नाउ लॉर्डशिप PW5 गीता देवी, वाइफ ऑफ वन डिसीज वीरेंद्र यादव, ये हमको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रही है हुजूर। तो in such circumstances where my presence is doubtful, I am convicted under section 149. You are member of unlawful assembly. Now PW6 is lordship informant. इन्फॉर्मेंट के बारे में PW10 का देखा जाएगा। इनमें से किसी की सेंटेंस सस्पेंशन हुआ है क्या? अभी तक नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हम आ रहे हैं हुजूर के सामने। एक बार थोड़ा सा PW, It has been rejected on behalf of Basmati Devi and Lal Yadav. Lordship, my case is of different footing. Of PW6 who is the informant of this case. इनका जो आयोग के द्वारा एग्जामिनेशन हुआ है, वो क्या कह रहे हैं? पैरा 3 में हुजूर आया हुआ, सुमित कुमार एवं अनिल यादव भागने में सफल रहे। भागने की कोशिश करी तो मार दिया। PW10 कह रहे हैं हुजूर आयोग, ये लोग भागने में सफल रहे, देयरफॉर डिड नॉट गेट एनी इंजरी। नेक्स्ट हुजूर जो फायरिंग की बात कह रहे थे PW2 कि 50 राउंड फायरिंग हुई, PW10 कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात हमारे सामने इन्होंने नहीं कहा था। और हुजूर दैट इज पैरा 12 में हुजूर के द्वारा पूछा गया था, बल्ब या रोशनी के बारे में जिक्र नहीं किया है। और हुजूर हमारा स्पेसिफिक केस है अंडर सेक्शन 313 में कि हम लाली यादव के, हालांकि इनको रिलेशन भी नहीं पता है हुजूर कि हम क्या लगते हैं लाली यादव के, वो कह रहे हैं कि भगीना, लेकिन नॉट आई एम मौसेरा भाई। अंडर सेक्शन 313 में हमने कहा है कि उनके मौसेरा भाई होने के चलते आई हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन दिस। That has also come in the evidence of PW4 lordship, PW10। इस कांड में अन्य गांव के निवासी जो अभियुक्तों के रिश्तेदार हैं को भी अभियुक्त बनाया गया है। PW10 लॉर्डशिप, मेरा स्पेसिफिक एवरमेंट है अंडर सेक्शन 330। सिंस आई वाज रिलेटिव ऑफ द लाली यादव विथ whom informant side has distributed
dispute on the account of opening of darwaja and land of 3 feet. और इस एक और चीज़ है हुजूर, सुमित कुमार के बारे में जो PW6 है, पैरा 16 में आया हुआ है, उसने ये नहीं कहा था कि सुदिष्ट को लालती और सीता यादव घसीट कर लालू के खेत में ले जाकर मारने लगे। जो जितना भी इनका एविडेंस है PW6 का, डेट इज इम्प्लेसमेंट बढ़ा चढ़ा कर कोर्ट के सामने कह रहे हैं, that was not supported by the PW10। और जो घटना का जो कारण है 3 फीट जमीन, ओपनिंग ऑफ द दरवाजा, हम अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं क्या इतना बड़ा वो बोन ऑफ कंटेंशन की इतने लोगों की जरूरत पड़ जाएगी? और दरवाजा खोलकर झांकर जो रात में विदाउट एनी सोर्स ऑफ लाइट टू आइडेंटिफाई 25%, अगर हम उसी गांव के रहते तब तो भाई चलो कोई बात नहीं, उस गांव के हैं, आपको पहचानने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन आई एम ऑफ अनदर विलेज, अनदर PS, क्यों हमको एक्यूज बनाया जा रहा है भाई ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिव ऑफ द लाली यादव? हजूर एक 149 पे सीपी साहब का एक जजमेंट है हजूर, 149 कब अप्लीकेबल होगा उसे लॉर्डशिप को तो पूरी जानकारी है, बताने की जरूरत नहीं, बताइए ना आप ना। हम फैक्ट हजूर के सामने रख दे रहे हैं, बाकी डेट इज पैरा 15 सर। हम उस गांव के रहते हुजूर तो बात कुछ अलग होती। अगर PW1 मेरा नाम ले लेता तब किसी और विटनेस की जरूरत थी ही नहीं हुजूर। That's all? लॉर्डशिप वही कह रहे हो जो कि अगर PW1 भी अगर मेरा नाम ले लिया जाता, दैट देयर वाज नो नीड ऑफ एनी कोऑपरेटिव एविडेंस ऑफ द, बट ही डिड नॉट नेम माय कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर हुजूर देखा जाए पूरा इंटायर एविडेंस PW1 टू लेकर 6 तक किसी का नहीं आया कि हाँ ये कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था। फॉर विच पर्पज कोई TIP परेड नहीं हुआ है हुजूर, कोई कंस्पिरेसी की भी बात नहीं आ रही है। हम हुजूर कस्टडी में हैं 25/12/2017 से, ओनली बेसिस ऑफ द, अगर मान भी लिया जाए जो 149, वो कोई ओवरटेक नहीं, कोई हमारे हाथ में कोई आर्म्स नहीं है। इन सच सर्कमस्टांसेस कन्विक्शन अंडर सेक्शन 149 रिड्यूट सेक्शन दैट, जो भी जजमेंट फैक्ट एविडेंस हुजूर के सामने हमने इलाबोरेट किया, दैट वाज नॉट कंसिडर्ड बाय द लर्नेड ट्रायल कोर्ट, देयरफॉर माय सबमिशन इज जजमेंट इट परवर्स नॉट सपोर्टेड विद द एविडेंस। और जो 3 आदमी का जो एक्विटल किया गया है, 2 आदमी का, वो दूसरे गांव के हैं, उनका इसलिए कि हाँ FIR में उनका नाम नहीं है। 1 आदमी का जो एक्विटल किया गया है FIR में नाम है, लेकिन उन पर कोई ओवरटेक नहीं है। दैट शुड बी प्रायोरिटी विद दैट पर्सन। आई वॉज इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ द डाउट लॉट, विभा कुमारी लॉट।
Yes. Please. That's Do you have to say anything? Lord, I am appearing on behalf of the informant. If permitted, my Lord, I'll assist the court. Yes, yes. My Lord, at the foremost, two co-convicts had made an application for suspension of sentence, and their application has been dismissed by this honorable court. Yeah. I may be permitted to share a copy of. Yes. Peshkar sir. Peshkar sir. Do sir. all these are the Lordship. same village, Lordship. Now, All Lordship. these persons are of same village. Now, Lordship, it would be important to appreciate the situation in which the FIR has been lodged. At dead hours of the night, multiple persons enter the house of the informant. It is a joint house in which PW 4 and 5 has specifically named this appellant as one of the assailants, one of the persons who entered the house and dragged few people, in which 3 of them were murdered outside the house, one on the road, another one in the agricultural fields, and my lord, 2 others were injured. My lord would also be pleased to appreciate the kind of injuries sustained by the deceased. Multiple injuries, my lord. It has come in para 13 onwards. Any of the witness alleging any overt act on his part? My lord, witness number 4 and 5. Yes, come to that. Where do they say and what do they say? I shall, my lord, refer directly to the statement or in the judgment. Should I? Come from the judgment. Judgment, Not from my the lord. statement. Sorry. My lord. What does PW4 say? घटना से लगभग 7 महीना पहले Come मेरे to that part where he says about the overt act of this person. He says that मैं भी हल्ला करते हुए सहदेव यादव के घर के पास पहुंचा, देखा गेहूं लल्ली यादव, गेहूंवन यादव, लाल यादव, लाली यादव का 2 बेटा जिसका नाम छपित है तथा दूसरे का नाम नहीं जानता हूं, बुघारू यादव जो गेहूंवन का बेटा, 3 लाल यादव का बेटा, दयानंद यादव, रट्टू यादव, सीता यादव, द एप्लेंट मिलॉर्ड, गेहूंवन यादव का 2 साला, लाली यादव का 3 भगिना, केनवा देवी, बसमतिया देवी घटनास्थल से घर जा रहे थे। मारपीट की घटना मैंने नहीं देखा था। So while returning from the place of occurrence, the appellant was seen by PW4 Miller. PW5 Miller. He states, para 1 of PW5. Yes, yes. घटना 8 महीने पहले आधी रात की है। मैं अपने पति के साथ सोई हुई थी। कुत्ता भौंकने की आवाज़ पर मेरी नींद टूट गई। मैंने लाली यादव, गांधी यादव and my lord, in 4th, 5th line towards the end she says Hulas Yadav, Dayanand Yadav and Sita Yadav, the appellant.
गाली देते हुए मेरे घर में घुस गए तथा मेरे पति को मारने पीटने लगे. So his presence at the place of occurrence at dead hours of the night has been identified by PW 4 and 5. Now, my lord, Birendra Yadav is a para 2 husband of this witness. para 2 in the cross examination PW 5 states अभियुक्त सीता यादव, हुलास यादव तथा दयानंद यादव मेरे गांव के रहने वाले हैं, इसलिए पहचानती हूं. She answers a specific question about this appellant in para 2 of her cross examination. Now, my lord, in the given circumstances, multiple injuries more than 10 and 15 and brutally assaulted, my lord, having multiple fractures of more than 7 or 8 in number as to one accused, my lord. There may be a possibility that under such circumstances, having so many numbers of accused persons, there would be a minor variation with respect to the eyewitnesses. But the fact remains is that 3 people have been assaulted, right from dragging them from their house and then taking them to the roadside and to the agricultural fields, where one dead body was recovered from the agricultural field, another from the roadside. And the kind of injuries that they have received, my lord, whereby the appellant's presence by entering into the house has been identified by PW5. At times, my lord, I may to some extent say that the persons who are getting assaulted might not know that who all assaulted him, the kind of injuries that has been received, my lord. It is referred in, my lord, para 14 of the impugned judgment. A lacerated wound over right leg 7 centimeter, my lord. Multiple fractures, lacerated wound over left 4 centimeter, fractures, my lord, altogether. And 3 of them have died because of these multiple injuries. And the reason for death has been described as, my lord, head injury and limb injury, my lord. The kind of fractures on limbs and body, elbows, all broken, my lord. The statement then. You have the statement. Lordship, घर में घुसा और मारा, गाली के लिए मारा. घर में घुसने के बाद तो तीनों कहता है. वो फॉर्मेटली कह रहा है, घर में घुसा. Lordship, PW2 in para 2. He did not identify me, Lord. The person who failed to identify 25 लोगों का नाम, मेरा नाम नहीं, कहीं भी ओवरटेक हुजूर के द्वारा जो कार्य किया गया, कोई ओवरटेक है कि नहीं? That has never came in any deposition of the any witness, Lord. पैरा 2 में खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पा रही है. What have you handed over? My ये स्टेटमेंट्स तो कोर्ट के स्टेटमेंट्स हैं. what statement have the PW statement? PW 5 4 and 5. 4, 3 and 4. Witness 4 and 5 चाहिए. 4 and 5 गीता देवी का statement. My they are in the different. Yes. दयानंद उल्लास रघु कुली मेरे गाड़ी देते हुए मैं खुश गया और तथा मेरे पति को मारा. तब मेरे पति को गाली याद है यादव कुछ कर लेगा सीता यादव.
सतीश सतीश चले गए, वहाँ पति मेरे पति को गांधी चले गया। अभी लोग मार्केट मेरे पति को गांधी आ गया, गांधी देखा क्या गाली दिया, निकल overtake me. In para 2, he failed to identify, Lordship. जनरल है कि नाम खराब Yes, what do you have to say? Yes, Lord. One more aspect, Milord, may I add that in 2022 last year, few of the accused persons have again murdered one of the family members of this informant, Milord. Last year. I have received a copy, it is not legible, Milord, but I have requested for obtaining a certified copy. Those who were One of them, them co-accused, not from them, they have not been released on bail, anyone. this trial is only with respect to 7 accused persons, Milord. There are other co-accused persons, Satish Kumar, Randhir Kumar, Madhir Kumar. They were absconding. Milord. And this FIR of the last year, it states that one of the family members, relatives of this informant, has been done to death in relation to the session trial which was happening. And one bodyguard has also been given to the family because of this last year's incident. Well, I'll share a certified copy of this FIR. I have requested. It is a That is verified copy. all right, your statement is there. Yes? Yes, but considering the gravity of the offence, Lordship, and the statement given by the informant in his first information report as well as before the court during trial, Lordship, not a single accused, Lordship, convict has been granted bail by the civil court, Lordship. Even the ladies inmates who participated in the offence, they have also not been granted bail, privilege of bail, or suspension of sentence and grant of bail, Lordship. इसीलिए मेरा But 3 persons have lost their life. Some of them got serious injuries in this incident, Lordship. How they brutally dragged the victims from their house, from the house, Lordship, and they done to death at the hands of the accused. Of course, the specific role has not been assigned to this very appellant that what overt act he has done. But simply forming the member of that very assembly, Lordship, that is enough. And one of the accused is admitting in 313, Lordship, that yes, my so-and-so has got enmity, that is why this occurrence took place, Lordship. The genesis of occurrence is land dispute. Admitted position is, Lordship. दिखाएं और कुछ बोलना है? Lordship, as per evidence of PW5, Lordship, in paragraph 2 of our evidence, he failed to identify me, Lordship. And of course, Lordship, there is 3 murder. But what is my role, Lordship? What evidence came against me? Except I am Bhagna of a even relationship, we did know the informant. In taking the totality of the evidence, Lordship, it totally creates doubt regarding my presence at the place of occurrence, Lordship. No verdict has been assigned any role. No source of light. All.